Assalamu alaikum. Today, inshallah, we'll be discussing patient presented in emergency and OPD with diarrhea. Uh, we will be discussing about the abdominal symptoms. We will be discussing about how to approach someone with diarrhea, how to ask associated symptoms, how to examine the patient, then how to construct diagnosis, and then how to investigate the patient. This is the same approach that we have used in patient with abdominal pain in our previous lectures. So again, we will revise the abdominal symptoms. These symptoms must be memorized. You have to ask these symptoms without any difficulty, and you ask all the symptoms in a go without missing any single one. So if the patient has any nausea or vomiting, yes. If yes, then apply FVCC, like what's the frequency, volume, composition and color. Any difficulty in swallowing for solids, liquids or both. Any heartburn, regurgitation or water breath. Any pain in abdomen. Any abdominal distension, localized or generalized. What about the frequency of stools? So are they loose? If they are loose, then again apply the FVCC, frequency, volume, color and composition. Is there any constipation, any yellowing of sclera, darkening of urine or clay colored stools, any worms in the stool, any relationship of the symptoms to particular diet? This is very important question. We have already discussed in previous lectures. Any abdominal symptom, you have to ask about its relationship with the diet. This is very important aspect. Any change in bladder habits. Now genitourinary symptoms. So any change in bladder habits, like frequency of micturition, color of the urine, volume, any frothy urine, any painful micturition, any blood in the urine, any difficulty in initiating the micturition, any straining, any loin to groin pain, any periorbital swelling or pedal edema, which indicates either glomerulonephritis, nephrotic picture or CKD, any testicular pain or swelling, if the patient is female of reproductive age, specifically inquire about pregnancy. Most of the patients are not aware of their pregnancy, so ask about last menstrual period, LMP. Any problem with the periods, any PV discharge, any pain during the periods, any pain during the intercourse. You have to ask these symptoms in detail. Any chest discomfort, any pleuritic pain or shortness of breath, any lower back pain. And then general symptoms. General symptoms include any fever, any skin rash, any change in appetite, any change in weight, any bone pains, any problem with the sleep or sleep disturbances, any pallor. तो पैलर का आप कैसे पूछेंगे कि रंग फीका तो नहीं हो रहा है आपका, तो ये आप क्वेश्चन पैलर के लिए पूछेंगे. एंड लास्टली लिम्फेडिनोपैथी, एनी लम्प्स और बम्प्स इन द बॉडी, के गले में, बगलों में, ग्रॉइन के एरिया में कोई गिल्टियाँ महसूस तो नहीं करते हैं आप. So these are the abdominal symptoms. You have to memorize them. This is very important thing. You have to memorize them before approaching someone with any particular symptom of GI or genitourinary tract. So in diarrhea, there are few things that you have to keep in mind. First thing, what is diarrhea? When we will say that the patient has diarrhea, so it's increased frequency of stools, like more than 3 stools per day, with increased stool weight or increased stool volume, like more than 200 gram per day, like a glass filled of a stool. You can say that the patient is having diarrhea. It might be acute or chronic. In acute diarrhea, diarrhea lasts for less than 2 weeks. In chronic diarrhea, diarrhea lasts for more than 4 weeks. Dysentery means passage of bloody stools. This is dysentery. What is persistent diarrhea? It's a sort of a vague term. Diarrhea lasting 2 to 4 weeks. This time frame includes more prolonged and atypical presentation of acute diarrhea. Then pseudodiarrhea or hyperdefecation. This is very important thing that you have to rule out, because patient will say that he is suffering from diarrhea, but it's actually not diarrhea. So
if the patient has increased frequency of stool but no increase in stool volume or change in stool consistency, then it's hyperdefecation, it's not diarrhea. So हम मरीज से पूछेंगे, मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बार बार पखाने आ रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे कि क्या पखाने पतले आ रहे हैं और कितनी मिकदार में आ रहे हैं, बहुत खुल के आ रहा है, ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। अगर मरीज कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे बार बार पखाना आ रहा है लेकिन पखाना ठीक आता है, मुझे प्रॉपर वेल फॉर्म स्टूल आता है और उस आता भी थोड़ा है अपनी मिकदार में जितना पहले आता था, दैट इज़ हाइपर डेफिकेशन, दैट इज़ नॉट डायरिया. Then tenesmus. The tenesmus is spasm of anal sphincter associated with cramping and ineffective straining of stool. Tenesmus is usually a feature of large bowel diarrhea. Tenesmus is a feature of large bowel diarrhea. Then fecal incontinence, leaking of stool or inability to control bowel movements. This is again very important thing. Sometimes patient present to you with fecal incontinence. Patients having anorectal pathologies like any anorectal carcinoma, any anal fissure, hemorrhoids, they usually present with fecal incontinence rather than diarrhea. You will specifically ask कि पखाना बीच में तो नहीं निकल जाता या आपकी शलवार के ऊपर स्टेन तो नहीं लगता है पखाने का, तो that is fecal incontinence, that is not diarrhea. So once it's confirmed that it's diarrhea, then you have to see whether it's a small bowel diarrhea or large bowel diarrhea. Clinically, small bowel diarrhea is usually watery, large in amount, associated with abdominal cramps, bloating or gas. So these are the features suggestive of small bowel diarrhea. Malabsorptive diarrhea is also small bowel diarrhea. So such patients present to you with large volume of bulky stools that are difficult to flush, sticky in nature and foul smelling. Fever, occult blood, inflammatory cells in stool are rare. Usually small bowel diarrhea doesn't present with fever, occult blood or inflammatory cells. Large bowel diarrhea on the other hand, these are frequent, regular, small volume stools that are associated with fever, blood or mucoid stools. RBCs and inflammatory cells are in stool present. So स्मॉल बाउल डायरिया में लार्ज वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, वाटरी होते हैं या फैटी होते हैं, पेशेंट्स यूजुअली एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ प्रेजेंट करता है, ब्लॉटिंग और गैस के साथ. लार्ज बाउल के अंदर फ्रीक्वेंट छोटी छोटी मिकदार के अंदर बार बार पेनफुल बाउल मूवमेंट्स हो रही होती हैं पेशेंट को, साथ फीवर भी होता है और ब्लड पस और म्यूकस भी आ रहा होता है स्टूल के अंदर जो. सो दिस डिफरेंशिएशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट because the differential diagnosis is different in small bowel diarrhea versus large bowel diarrhea. So how to ask the details of symptoms? So the patient comes to you with a description of diarrhea, you will ask about the details of the symptom कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इज इट ट्रू डायरिया और नॉट. आपने पहली चीज़ ये डिफाइन करनी होती है कि वाकई इसको डायरिया है या हाइपर डेफिकेशन है. सो फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम एंड चेंज इन कंसिस्टेंसी, तीनों क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे. हाउ इज इट स्टार्टेड, एनी पोटेंशियल ट्रिगर. तो दूसरा सवाल आपने पूछना कि शुरू कैसे हुआ, कोई पोटेंशियल ट्रिगर आपको मिल जाता है. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आप चाह रहे होते हैं कि पेशेंट एंटीबायोटिक पे तो नहीं था. एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया यूजुअली 48 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग एंटीबायोटिक आपको मिलता है. मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा गला ख़राब हुआ था, मैंने एंटीबायोटिक शुरू की, आज तीसरा दिन है और आज पतले पखाने शुरू हो गए मुझे. या लैक्सेटिव इंड्यूस्ड डायरिया जो है उसमें आपको ट्रिगर मिल जाएगा कोई जो, या उसकी कुछ स्पेसिफिक चेंज इन डाइट है कि पेशेंट कहता है कि मैंने डॉक्टर साहब ट्रैवल किया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे खाना खाया है, पानी पिया और साथ ही लूज मोशन शुरू हो गए. ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर इस तरह से आ जाती है. तो पोटेंशियल ट्रिगर को आपने देखना है कि व्हाट ट्रिगर्स दिस कंडीशन. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग इट, कब से है आपको. सो अक्यूट वर्सेस क्रॉनिक का आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा. इज इट गेटिंग वर्स और बेटर, तो बेहतर हो रहा है या ख़राब हो रहा है. डज इट वेक यू अप एट नाइट, ये बहुत अहम सवाल है जो कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी या रेड फ्लैग है कि डायरिया की वजह से मरीज़ की रात को आंख तो नहीं खुल जाती है. यूजुअली क्रॉनिक डायरिया के अंदर ये इस सवाल की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है. What aggravates it and what improves it? Specifically ask in relationship to the foods and drugs. दो ही चीज़ें, ये दो चीज़ें ट्रिगर्स में हम देखते हैं, यही दो चीज़ें इसकी एग्रीवेशन और एलिवेशन के अंदर हम देख रहे होते हैं कि किसी ख़ास चीज़ के खाने से बढ़ता है डायरिया आपका, या कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे थे उसके बाद शुरू हुआ है. और
बेहतर किस तरह से होता है, किसी ख़ास दवाई को दवाई ली आपने उससे बेहतर हो गया, या खाना छोड़ने से बेहतर हो गया। ये एक अहम चीज़ है। अक्सर पेशेंट्स जो हैं जब डायरिया होता है खाना पीना कम कर देते हैं, उससे उनका डायरिया इंप्रूव हो जाता है। तो मरीज़ों को पता होता है कि फास्ट के साथ उसका रिलेशन है या नहीं है, तो ये आपने लाजमी इंक्वायर करना है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज टूल्स, यस, ये अब FVCC आप करेंगे। पहले आपने ओडी पैरा किया है, उसका ऑनसेट देख लिया, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेशन और एलिवेशन फैक्टर्स आपने देख लिए। अब आप FVCC करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज टूल्स, यस, एटलीस्ट 3 पर डे जो है वो डेफिनेशन के लिए चाहिए हमें। मोर देन 10 स्टूल्स हैं तो ये रेड फ्लैग साइन है। वॉल्यूम ऑफ लूज टूल्स मोर देन 200 ग्राम पर डे होना चाहिए डेफिनेशन को पूरा करने के लिए। कलर एंड कंपोजिशन, यस, ये अहम चीज़ें, ये डिफाइन करती हैं कि डायरिया किस तरह का है। अगर तो वाटरी है तो आइदर सिक्रीटरी होगा या ऑस्मोटिक होगा, खासतौर पर जब क्रॉनिक डायरिया को आप अप्रोच कर रहे हैं। Are they bulky, large in amount, foul smelling, sticky and difficult to flush? These are the characteristic features of malabsorptive diarrhea. आप ये एक लाइन में सवाल करेंगे कि बहुत ज़्यादा मिकदार में तो नहीं आते हैं और चिकनाई वाले पखाने तो नहीं होते हैं, बदबूदार तो नहीं होते हैं, नीचे फ्लश से चिपक तो नहीं जाते हैं, ज़्यादा पानी तो नहीं बहाना पड़ता है उनको फ्लश करने के लिए, ये आप पूछेंगे उनसे। देन इफ देयर इज एन पस, ब्लड और म्यूकस इन द स्टूल, तो ये इन्फ्लेमेटरी डायरिया के अंदर चीज़ आती होती है। सो FVCC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्रोच टू डायरिया। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, ये दो आपको डेफिनेशंस के लिए चाहिए। देन कलर एंड कंपोजिशन आपको अंडरलाइंग क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए कि ये सेक्रेटरी ऑस्मोटिक है, माल अब्जॉर्टिव है या इन्फ्लेमेटरी डायरिया है। Then, as we already discussed the approach, once you complete the ODPARA and FVCC, then you will ask about the other abdominal symptoms that we have discussed in the initial slides. Starting from nausea and vomiting, you will ask all the symptoms to the relationship of the symptom with the diet. So आप वो सारे पूरे करेंगे. Then general symptoms पूछेंगे. देन ड्रग्स सबसे अहम, डायरिया की अप्रोच में ड्रग्स बहुत अहम है, खासतौर पे लैक्सेटिव्स आपने पूछना है। सॉर्बिटोल गम्स, आई हैव स्पेसिफिकली मैंशनड इट। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आपके पास वो क्रॉनिक डायरिया के साथ। एक चीज़ जो आपको मिलती है, जैसे खासतौर पे एथलेटिक्स हैं या अक्सर यंगस्टर्स को आदत होती है गम चबाने की, तो सॉर्बिटोल गम्स चबाने के आदी होते हैं, सुबह से शाम तक मुंह में गम चबा रहे हैं, उसमें सॉर्बिटोल होता है। सॉर्बिटोल इज एन लैक्सेटिव, तो वो भी डायरिया करवा देते हैं। आस्क अबाउट एन इन्वायरमेंटल, केमिकल और टॉक्सिक एक्सपोजर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन ट्रिगर डायरिया लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अक्सर फार्मर्स हमारे पास आते हैं, जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं फसलों को, तो वो कहते हैं कि जी उसके बाद उनको अब्डोमिनल पेन शुरू हो गई, डायरिया शुरू हो गया, पसीने आना शुरू हो गए, सांस में दुश्वारी होगी। दैट इज़ अ फीचर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। आस्क अबाउट एंडोक्राइनोपैथीज, डायबिटिक डायरिया, हाइपरथायराइड डायरिया, ये सारे के सारे फीचर्स आपको इन कंडीशन में मिल जाते हैं। डायबिटीज़ की आप हिस्ट्री भी ले लेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी पूछ लेंगे। हाइपरथायराइडिज्म की भी आप स्पेसिफिकली पूछेंगे कि जी आपका वज़न कम तो नहीं हुआ है, गर्मी तो नहीं लगती है, हाथ तो नहीं कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं होती है, भूख ज़्यादा लगती हो आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स बढ़ गई हो। आमतौर पे हाइपरथायराइडिज्म में भी हाइपर डेफिकेशन होती है रेदर देन लूज स्टूल्स के, और डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हाइपर डेफिकेशन ही हो रही होती है। आस्क अबाउट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, यस, स्पेशली एंटेरोपैथिक जो आर्थराइटिस है, IBD के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं। क्रॉनिक ब्लडी डायरिया, इफ द पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया, एंड स्पेसिफिकली आस्क अबाउट एसोसिएटेड जॉइंट पेन्स and limitation of movements, and other connective tissue features like change in color of fingers, any skin rash, any photosensitivity, any hair loss, any oral ulcers, then joint pain, swelling and limitation of movements, any dyspnea, pleuritic chest pain, abdominal pain, change in color of urine, frothy urine, all the features of connective tissue disorders you have to inquire in a patient presented to you with chronic diarrhea, especially bloody diarrheas. Then ask about family history. This will give you a clue about variable conditions like celiac disease and things like that. Ask about travel. Yes, travel बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे acute और सब acute डायरिया को अप्रोच आप कर रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी लें आप पेशेंट की, जो है हो सकता है उसको ट्रैवलर्स डायरिया हो, या और बहुत सारी कंडीशंस हैं और बहुत सारे बग्स हैं जो कि ट्रैवल के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। और ट्रैवल में सिर्फ आपने सफ़र का नहीं पूछना कि आपने कहाँ सफ़र किया है, आपने उसकी डिटेल्स लेनी है कि कहाँ सफ़र किया है, वहाँ पे कहाँ पे रहे हैं आप,
पानी किस तरह का पीते रहे हैं, वहाँ पे खाना किस तरह का खाते रहे हैं, वहाँ की कोई लोकल कुजीन, कोई लोकल फल, कोई रेडी से, कोई फेरी वाले से कोई चीज़ें लेके तो नहीं खाई हैं आपने जो है। illicit sexual behaviors, HIV is very important comorbidity to ask while approaching someone with diarrhea, especially chronic diarrhea. तो illicit sexual behaviors का पूछें while keeping considering HIV. raw milk and animal waste exposure, ये बहुत अहम सवाल है। रॉ मिल्क और एनिमल वेस्ट एक्सपोजर ये आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। अगेन आस्क अबाउट टीबी कंटेक्ट, ट्यूबरकुलोस कंटेक्ट का भी आपने क्वेश्चन लाजमी करना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क व्हाइल अप्रोचिंग समवन विद डायरिया, बोथ acute and chronic. Then examination of the patient, this is almost the same approach that we have discussed in some patient presented with abdominal pain. So take a very good journal look while taking history, whether the patient is looking distressed, sweaty and anxious, pale, jaundiced, wasted, hands in particular position like he's tying his hands in front of the abdomen, like patients with having colic abdominal pain, and then abdominal shape, whether is there any distension present or not. Then get vitals. Now you have to determine whether the patient is hemodynamically stable or not. Hemodynamically stable or not. Hemodynamically unstable patient means either dehydration or sepsis. Either dehydration or sepsis. That patient needs urgent care, emergent care, emergency care. Then do a general physical examination. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर हाइड्रेशन स्टेटस, स्किन टर्गर को देखेंगे आप, पेशेंट की कैपिलरी रीफिल टाइम को देखेंगे, देन पैलर देख लें, जॉन्डस देख लें, लिम्फेडिनोपैथी को देख लें, कोई स्किन रैश तो नहीं है, बोन टेंडरनेस, आर्थराइटिस, ये चीज़ें आप देख लेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे आप, देन रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेंगे पेशेंट की आप इस केस में। यूजली डायरिया केसेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कोई फाइंडिंग मिलती नहीं है, लेकिन इफ़ द पेशेंट्स हैज़ सी कार्सिनोमा है तो उसमें आपको मैस मिल सकता है, लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। इस तरह अगर पेशेंट को IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स मिल सकते हैं, लाइक स्किन रैश मिल सकता है, बोन टेंडरनेस, आर्थराइटिस मिल सकता है। सिमिलरली अगर विप्पल्स है पेशेंट को या कार्सिनोमा है तो लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है आपको जो है। देन रेक्टल एग्जामिनेशन करना है आपने जो है पेशेंट का जो है।